Hi guys, very good morning. My name is Chandan Singh. I am here at my farm, and the thing is that, as you know, that there's so many banana trees here at my farm, and these trees are being damaged by some pests. So, in order to kill those pests, we have arranged some khad, some organic chemicals, so that those pests can be killed. So, the khad, as far as I know about that, I can recognize one that is called urea, the white one. So, urea is there, and some other things are also mixed. So, तो इसमें क्या क्या है? और इसमें है तोरी का खल्ली, अच्छा सरसों का खल्ली, अच्छा यूरिया, हाँ थाइमेट। केला के बीज तक दिया जाएगा। अच्छा अब इसके बाद केला का विकास होगा। ओके केले के जड़ में देना है। जड़ में सफ़ेद वाला है वो यूरिया है। यूरिया है और सरसों का खली है। ओके थाइमेट है। थाइमेट कीड़ा उड़ा मारने के लिए। So those things, those organic chemicals, the mixture of those chemicals will be put at the root of the banana trees, so that those chemicals can kill those pests and it can be treated. The trees can be treated, I would say. Thing is that due to those pests, what is happening? Even the trees, this is called kele ka thumb, they are also being damaged by those pests, and the banana, the bunch of bananas, they are also not up to the mark. The quality of those bananas are not up to the mark just because of the pests. So khad is required, those chemicals are required. So as you can see, that guy, he is going to do all the things. So he is making something. क्या कर रहे हैं आप? बोतल काट रहे हैं। बोतल काट रहे हैं। तो खाद इसी से देना है? हाँ, इसी से देंगे। ओके नपना बन रहा है। So for a measurement, he is cutting this bottle so that he can get a particular shape, whatever the shape is required to fill the खाद, that chemical. तो कोई अंदाजा होता है कितना देना है? हाँ, आधा किलो। तो इसमें आधा किलो आ जाएगा? तो एक पेड़ में आधा किलो देना है? एक पेड़ तो नहीं है, 3-4 पेड़ रहता है। अच्छा, जो ग्रुप होता है। Okay, so as this guy is saying that half kg of organic chemical is required. ये organic ही है ना chemical, ये जो यूरिया वगैरह है? Okay, so half kg that chemical is required in order to put at the root of the group of banana trees. There could be one banana tree, or maybe 2, or maybe 3. The entire group, as you can see, there are so many banana trees. Okay. धो लिया। अथी क्या होगा? जड़ वाला है, अथी जंगल जड़े वाला। अच्छा, मिट्टी उट्टी लगा के बढ़िया से साफ कर। so this is the measurement, eh? Now he is going to wash it off. Good. तो इस बोतल में पहले कोई और केमिकल था? जंगल जड़े वाला। Okay. घास जड़ने वाला छिटवाए थे। Amazing, there are so many chemicals. वो घास जड़ जाता है। In order to burn those wild grass or any kind of grass or wild plants, there is a chemical. That's lovely. I'm getting some experience, guys. Since I'm in my village, I have got to learn a lot of things related to farming. That's why I'm making a lot of videos. I really enjoy a lot coming here about खाद, like manure, गोबर वाला खाद है। गोबर वाला खाद भी देते हैं ना? ओके। एंड कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है? वही होता है, कंपोस्ट जंगल झाड़ से बनाया जाता है। ओके, तो वो भी खादे होता है। कंपोस्ट, मैन्योर एंड दिस ऑर्गेनिक केमिकल्स, लवली। ओके, तो लाल मोहन हो जाओ शुरू। ओके, तो ये तरीका है। ओके,
So as you can see guys, he is removing the soil from the root part. चिंता ना करें। Okay, थोड़ा बहुत जड़ कटेगा। हाँ, बंगला कटता ही तो कटता अच्छा बंगला। है। एकरा ऊपरों से तनी झाड़ दी। Okay, so he has removed the soil from that area, and now as you can see that he is ये डब्बा रखा है। हाँ हाँ, ये डब्बा रखा। okay. So this is the way. So guys, as you can see, he just is scattering that chemical. ओ ये है सरसों का खल्ली है, हाँ, यूरिया है, थाइमेट। okay. Now he is covering it. Okay. अभी केमिकल अपना असर दिखाएगा। हाँ, बिल्कुल। वाह। So guys, did you see? This is the इससे way. होगा कि पौधा मोटाएगा, घौर भी अच्छा देगा। Okay. यानी ऊपरों से झाड़ दिया हो। Earlier, see guys, I had no idea that in order to grow banana plants also, you have to put some khad at the root. This I have seen it first time. So guys, here also as you can see, he is removing the soil. Oh, छोटा पौधा काटना है? ज़्यादा भी नहीं ठीक होता है। Okay, 3 गो रहना चाहिए। okay, बाप बेटा पोता। okay. कैसे कैसे? बाप बेटा पोता अच्छा 3 केले का पेड़ रहना चाहिए एक आथी में। एक ग्रुप में 3 होना चाहिए। 3 होना चाहिए, ज़्यादा है ओके, तब विकास करता है। उसी हिसाब से उसको भोजन मिलता है। so guys, really I learned a new thing here, that if you talk about a group of banana trees, so 3 banana trees are required in one particular group, then they can grow in a better way. If there are more than 3, then you know better what will happen. Maybe one tree will get rotten, or maybe the fruits will not be good, the bananas will not be up to the mark. Okay guys, thank you very much for watching this video. Now actually I want some chilies. After that I will go back to my home to have my breakfast, so I want some chilies. So I'm going to take at least 2-3 chilies from here. Okay, for my salad I will put them into my salad guys. Okay guys, thank you very much everyone. See you in another episode. Thank you guys.